I now request Sri Zakir Nazir sir and Ghulam Abbas sir to kindly welcome our guest of honor, Sri Ranjit Singh ji, with a bouquet. Thank you, sir. It is my honor and privilege, ladies and gentlemen, to welcome you all to the mini Vartalab on 3 new criminal laws under the aegis of Press Information Bureau, Jammu. I would like to thank each and every one of you for your taking out your precious time today and join us in our effort to mobilize and spread awareness about these new legislations set out to break free the colonial shackles and usher us into a new era of judicial delivery system. Ladies and gentlemen, it is for the first time that through these newly enacted criminal laws with the Indian soul, our criminal judicial system will be governed by India, for India, and the system created by the Indian Parliament. So, without further ado, and a huge round of applause, I'd like to call upon our guiding force and pillar of strength, Mr. Ghulam Abbas Sir, IIS, Director PIB and CBC, to deliver his inaugural address. हेलो। कल मैं होशियार था, दुनिया बदलना चाहता था। कल मैं होशियार था, दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदल रहा हूँ। Our chief guest, Shri Shivam Siddharth ji, SP North. Our guest of honor, Senior Advocate Shri Ranjit Jambal ji, my colleague Mr. Zakir Nazir Saab, our senior colleague Mr. V.K. Magotra, who is joining our media workshop, and my dear and respected media persons. On behalf of Press Information Bureau, Government of India, Jammu office, I welcome you all for this mini Vartalab or media workshop. Press Information Bureau has a mandate to reach out to the people. The various schemes of centrally sponsored plans. We had been organizing such programs for various developmental schemes, but this is for the first time that we are organizing a Vartalab on 3 new criminal laws. You are aware that change is law of nature, and keeping in view that the Government of India has changed the laws and all the modern requirements have been kept into consideration, you will be briefed about all those laws through our esteemed experts, because law enforcing agencies and advocacy has a big role through courts for providing justice to the people who are facing various criminal issues,
criminal cases rather. So we have tried to involve all those agencies, and of course, like other schemes, to reach to the corner of Jammu and Kashmir and also the whole country, we definitely need help of the media persons. So we have decided to brief you about these three new criminal laws so that the information could reach to all the concerned through your valuable channels and publications. So I, on behalf of my whole team and Press Information Bureau, Government of India, welcome you all in this Vartalab with the hope that we will be able to spread the message, because to inform is to empower. So a brief of these laws, you will definitely watch a presentation here, and you will our experts will also speak on the topic. Just a brief introduction of these laws. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. The second is the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. And the third one is the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. The government has introduced many changes in these laws as per the requirement of the modern system, right from FIR to witness and other things. It has been changed to a large extent, and as you might have heard that these laws were incorporated during colonial time. So I think this is also a great opportunity to write off all those laws which were introduced in India by the English rulers. The government has also created a NCRB Sankalam app which could provide information, and the National Crime Record Bureau is just updating this application, which will show you the difference between the old laws and the new criminal laws. So, the aim of implementing these laws, which are being implemented from 1st of July 2024, is basically to provide justice and not the punishment. I welcome you all once again, especially our chief guest, our guest of honor, and media persons. I am aware that they are busy with their activities, but I think it is important to know about the new criminal laws. So we have requested you, and you have honored our request. I am really thankful from the core of my heart on behalf of my team also, with the expectation that your cooperation through your media will help us in spreading the word. I will take your leave with a couplet that इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है. इल्म मीन नॉलेज. इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है. हिकमत ये है कि आपको मालूम हो कि कब कहना है. हिकमत इज स्ट्रेटजी. तो होप वी विल just follow this couplet, and thank you once again. Thank you very much.
Thank you so much, sir. We now have a very informative and interesting presentation lined up, and to guide us through it, I'd like to call upon Mr. Zakir Nasir, sir, IIS, Media Communication Officer, without whose immaculate wisdom, work ethics, and efforts this day wouldn't have seen the light of day. We shall also be serving little light refreshments, so please help yourself with some delicious snacks. Thank you. थोड़ा मूव कराएं वो उस पर आ नहीं है ना प्रोजेक्टर पे. Respected dignitaries on the dais, dear media colleagues and friends, I welcome you to this mini Vartalap, which is an effort by the Government of India to raise awareness about the newly enacted 3 criminal laws, which will for sure be a path-breaking legislation measure by the Government of India. So I would start with the PPT to give you an overview of these 3 crucial legislations. So Vartalab, if I would describe it, it's actually an interface between the Press Information Bureau of India, which acts as a nodal agency on behalf of the Government of India to communicate with the media and inform media about Government of India schemes, programs, policies, and reach through the media the masses to create awareness about such programs. So, next slide. No, first. 3 laws. Yeah. So this mini Vartala will be focusing on the salient features of 3 criminal laws, namely the Bharatiya Nyayak Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, Bharatiya Saksham Adhiniyam. As you know, these 3 crucial legislations will be replacing the colonial laws of Criminal Procedure Code CRPC, Indian Penal Code IPC, and revamping the Indian Evidence Act. Next. Next. So, as stated earlier, the purpose of these 3 new legislations is to give justice, not punishment. The laws, and this will be a path-breaking step towards judicial system or delivery of justice through digital media. So, if we could just see what the President of India, Srimati Draupadi Murmu, had to say about these legislations, that these bills will replace the colonial era, British era codes and indigenize the Indian judicial system. In a way, we will be breaking free of the shackles of colonial legacy with the implementation of these laws, which will take effect from the 1st of next month. Next. Rightly stated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi that police now need to work with data instead of danda. So punishment, of course, will be there, but there will be some incentives so that justice delivery system is sped up. The Prime Minister has also described these new laws as a step towards making a new era in the judicial criminal justice system of India. Next. This set of new legislation has been piloted by the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah. He has described in his ex post
that this new justice system will be empowered by state-of-the-art technologies to deliver transparent and swift justice to all. As our Honorable Director Sir stated that we will now be transitioning towards e-FIRs, e-case diaries, and so on. Next. So if you could go through the salient features of these legislations. Now, as we often see that there are contradictions between what the police record and what the witness or the culprit says. So it takes a lot of time to dispense justice. Now here on, that's on from 1st of July onwards, all police statements will be videographed. That will be now mandatory. Next. Yeah. So physical evidence will of course be there, but now as we are transitioning into a new delivery of justice system, so electronic evidence will now be treated at par with the physical evidence. Next. Yeah, this one is very important. Non-custodial punishment such as community service and counseling for eligible individuals has been introduced to incentivize witnesses, and as you could see that there will be reduction in the years of punishment that a person is awarded by a court of law. So it will be either one-fourth of the total duration and or for 1/6 of that. Okay, next. So if you can make a comparison, what was previously there and what is now being introduced. Earlier, the colonial Indian Penal Code of 1860 punished petty criminals with jail or fines. Now you will be seeing a reformed justice delivery system which will be introducing community service as an incentive or an extension of reformative justice. Next. Earlier, snatching, as you often see in our cities, bikers often indulge in such crimes. So, and who are at the receiving end? The women folk. So now, snatching has been criminalized. Earlier, this was a grey area. There was no specific detail about this in the earlier Indian Penal Code. Now it has been amply defined that it will now be a criminal act. Next. So, as per the Indian Penal Code, the maximum punishment prescribed for grievous hurt was 7 years. Now that has been hiked to at least 10 years in jail, extending to life. Next. So yeah, these laws will now resonate with the aspirations of a nation striving for a more equitable and harmonious society. These laws will usher in a new era of transparent legal processes where fairness and integrity stand as pillars of societal well-being and progress. Next. So that's it, a brief overview of the newly enacted legislations. I thank you so much for taking your time and gracing this occasion. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Thank you so much, sir. That was indeed very informative and a thought-provoking PPT. I'd now like to hand over the floor to the professionals to educate us further and shine some more light on the three most awaited new criminal laws. Please join me as I welcome our guest of honor, Mr. Ranjit Singh Jomwalji.
Advocate, to deliver his speech. Sir, the floor is yours. गुड मॉर्निंग ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया इज ए ग्रोइंग नेशन। एज ऑन टुडे वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द फिफ्थ largest economy of the world, and population wise also we are number one. So with the changing scenario, with the changing circumstances, there was always a need that the criminal law system, which is controlling our crimes, which is looking after the rights of the victims, where there are provisions for punishing the offenders, change must be there. हमारी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहा हमारे बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, इट वाज अनकोडिफाइड। तो कोडिफाइड फॉर्म में जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्रिमिनल लॉज लाए, तो उन्होंने अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। सिंस इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज, और उसके अलावा और भी जो कॉलोनीज थी जिनको हम आज की डेट में कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, उन सब के लिए कॉमन जो है कोड प्रोविजंस ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इम्पोज किए एज ए कॉलोनी। जो एक रूलर अपनी कॉलोनी को इम्प्लीमेंट करता है, तो उनका जो इंटेंशन थी ब्रिटिशर्स की, या जो उनका पर्पस था, इंडिया को गवर्न कैसे करना है, पनिशमेंट कैसे देनी है हार्श से हार्श जो ऑफेंडर्स को, तो वो थी ऑफेंडर सेंट्रिक एक अप्रोच थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे इंडिया जो है is evolving as a society, is growing as a economy, is growing as a society, there was always a need that the new laws जो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली, हमारे जो एक कल्चर है उसको जो सूट करती हैं चीजें, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसी पर्पस के साथ गवर्नमेंट के माइंड में हमेशा से ये था कि उन लॉज को जो है, जो प्रेजेंट हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको हम जो है एनफोर्स करें। तो इन सारे न्यू लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इनको नए लॉज को लाने के लिए एक छोटी सी बैकग्राउंड ये रही है कि एक तो हमने जो कॉलोनियल एक लॉज से उनसे बाहर आना है, एक उन लॉज की हमने जो है इंडियनाइजेशन करनी है, क्योंकि आज की डेट में वी आर दी लार्जेस्ट जो है डेमोक्रेसी है, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप वर्ल्ड ओवर नजर डालेंगे तो इंडिया के जो है मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर सीईओज ऑफ द एमएनसीज। तो अगर हम वर्ल्ड की जो ग्लोबल जो एक सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे जो लॉज हैं वो अपने होने चाहिए, जो हमारे लोगों को सूट करें, उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक। एंड एज यू ऑल नो, चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लाया गया, तो उस वक्त जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, हेडेड बाय श्री B.R. अम्बेडकर जी। उसमें और भी बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया वो उसको हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बड़ी सारी कंट्रीज का जो है एक मिक्सचर हमने उसका बना के, जिसको आज की डेट में हम कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड और फ्लेक्सिबल है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें भी अमेंडमेंट्स आई। यू वुड बी सरप्राइज कि आज तक जो है 106 जो अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुकी हैं। तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने, जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वो अपने लोग थे, इंडियंस थे। 1947 के बाद हमने 1950 में आया, जिसको हमने बनाया 4950 में आया। अगर उसमें 106 जो है अमेंडमेंट्स आ गई, तो जो हमारे क्रिमिनल लॉज थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम के मोर देन 150 ईयर्स अराउंड जो है वो चल रहे थे, उनमें भी सिस्टम के हिसाब से उनको चेंज लाने की जरूरत थी। तो अब कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट है कि शायद जो है गवर्नमेंट का कहीं मूड बना और गवर्नमेंट ने जो है क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट्स ला दी, और इसकी इंडियनाइजेशन जो है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो करना चाहती थी, कि गवर्नमेंट की अप्रोच है कि इसकी इंडियनाइजेशन करनी है। लेकिन वो एक मिथ है, वो एक रियलिटी से दूर है, क्योंकि जो भी चेंजेस आई हैं उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड है। अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो 2003 में मालिमठ कमेटी की जो है एक रिकमेंडेशंस आ गई कि जो विटनेसेस की प्रोटेक्शन है और जो विक्टिम कंपनसेशन है वो
ये प्रोविजन जो है क्रिमिनल लॉ में आने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वो चेंजेस आ भी गई सब्सिक्वेंटली। आप सबको याद होगा दिल्ली में गैंग रेप और मर्डर केस हो गया, निर्भया मर्डर केस बड़ा पॉपुलर केस हुआ, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हुए, और उसके बाद एक वर्मा कमीशन जो है बिठाया गया। वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशंस आ गई कि जो विमेन और जो चिल्ड्रन जो सेंट्रिक जो लॉज है उनको एनफोर्स करना चाहिए, और पर्टिकुलरली विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, सेक्सुअल क्राइम्स हैं, उनके लिए जो पनिशमेंट जो है वो हार्श पनिशमेंट करनी चाहिए, और जो ऑफेंडर्स हैं, रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, और जो इस टाइप के हीनियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहीं भी एस्केप रूट नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है डिफरेंट कमेटीज जो है वो बनाई, उनकी रिपोर्ट्स जो ली हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जुडिशरी हो गई, पुलिस एजेंसी हो गई, अपना एडवोकेट्स हो गई, पब्लिक एट लार्ज हो गई, और मोर पर्टिकुलरली जो विक्टिम्स हैं उन सबसे जो है सजेशंस इनवाइट की, और डिफरेंट कमेटीज की जब रिपोर्ट्स आ गई, लॉ कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दी कि क्रिमिनल लॉज में जो है वो चेंजेस आना जो है एक बहुत जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली ये जो नए लॉज, मेरे से जो पहले स्पीकर थे उन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन आपको दी है, ये नए लॉज जो है 3 जो 1 जुलाई 2024 से जो है एनफोर्स होना स्टार्ट हो रहा है। अब मोटे मोटे तौर पे आपको जो है प्रेजेंटेशन में दिखा दिया है, प्रोविजन से आपको पता चल जाएंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत मेरे जहन में है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे साइबर क्राइम्स हैं बड़ी फास्ट रेट के ऊपर जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए कोई पहले प्रोविजन नहीं था सीआरपीसी में, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, वो अब बीएनएसएस में आ गया, भारतीय न्याय जो है संहिता में, इसमें नागरिक संहिता में आ गया। वो मॉब लिंचिंग का जो है आपको पता है बहुत सारे रिपीटेड ऑफेंसेस ऑल ओवर इंडिया हो रहे थे, उस चीज को एक बड़ा सीरियस क्राइम आज की डेट में आ गया, उसको कवर करने के लिए प्रोविजंस आ गए हैं। जो गैंग रेप जो है और उसके बाद जो मर्डर हो जाते हैं उसकी जो एज थी पुराने प्रोविजंस में, वो विक्टिम की एज जो पहले 12 ईयर्स थी उसके बाद उसको 15 ईयर्स एनहांस किया, वो 18 ईयर्स कर दी है। आपको पता है एक बहुत बड़ी डिबेट रहती है, लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, आइडेंटिटी जो है वो अपनी कंसील करके लोग मैरिजेस कर रहे हैं, फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं मैरिजेस के लिए, कहीं प्रमोशन में, कहीं ट्रांसफर में अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता तो उसके लिए भी एक जो है पनिशमेंट की एनहांसमेंट हो गई है, उसमें भी प्रोविजन रख दिया है। जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम्स बढ़ गए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स के अगेंस्ट भी प्रोविजन आ गया है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया एज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है वैसे वैसे क्राइम्स जो है इंडिविजुअल क्राइम से बढ़ के वो जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स की तरफ जो है सोसाइटी जा रही है। और इन सब चीजों को चेक करने के लिए जो सीआरपीसी, जिसमें हम कहेंगे आईपीसी या एविडेंस एक्ट है, उसमें सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं थे। तो इन सब चीजों को जो है कवर अप करने के लिए और साथ में जो विक्टिम्स हैं उनको प्रॉपर राइट ऑफ हियरिंग मिले, उनको कंपनसेशन मिले, जो विटनेसेस हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखेंगे जो 2021 का जो रिपोर्ट है, इंडिया में जो है कन्विक्शन रेट है दैट इज 57%। कंपैरेटिवली इजराइल में 93% जो है कन्विक्शन रेट है, यूएस में 90% है, और इंग्लैंड में जो है 80% कन्विक्शन रेट है। अब क्राइम तो इंडिया में भी हो रहे हैं, बड़ी फास्ट रेट के ऊपर ग्रोथ हो रही है क्राइम की, क्राइम्स हो रहे हैं, सोसाइटी कोई भी सिविलाइज सोसाइटी है वहां पे जो है क्राइम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। तो क्राइम को चेक करने के लिए उसके लिए सफिशिएंट प्रोविजंस रखना वो बड़ा जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ने जो है ये सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और ये वेलकम स्टेप है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इंग्लिश से हिंदी में नाम बदल दिया है, उसमें जो इंटेंट है गवर्नमेंट का वो भी बड़ा क्लियर है। जैसे अगर आईपीसी का नाम बदलना होता है हिंदी में तो वो सीधा साधा था भारतीय दंड संहिता, अब वो दंड संहिता नहीं है, वो न्याय संहिता आ गया। और न्याय संहिता के लिए उसके लिए एडुकेट जो प्रोविजंस हैं वो भी उसमें रखे हैं। और जब ये सारे प्रोविजंस आ गए जिसमें जो लोग जो मैटर करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वन ऑफ दोज, तो उनका ओपिनियन था दिस वुड बी ए वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडिया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन की या गवर्नमेंट की जो उसमें जो ओपिनियन रही, तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड रहा कि ये जो एक ब्रिटिशर्स का एक प्रिजुडिशियल और एक
टायरेनिक जो एक अप्रोच थी उसको हमने जो हटा के एक पब्लिक सेंट्रिक और जस्टिस सेंट्रिक जो है अप्रोच के तहत इन प्रोविजंस को हमने लाया है। और इसी तरह से लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट्स रही और सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता जी, उनका भी ओपिनियन था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो है इन प्रोविजंस को, नए प्रोविजंस को लाना बड़ा जरूरी था। तो इस सारी बैकग्राउंड में ये प्रोविजंस आए हैं। इनके क्या क्या डिफरेंट वो है वो आपने जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू भी देखा है। वो मेरे बाद जो स्पीकर हैं चीफ गेस्ट वो भी आपको मोटे मोटे तौर पर बता देंगे। लेकिन ये दिस वाज द मच रिक्वायर्ड नेसेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये जो आए हैं एक वेलकम स्टेप है। इस सब को हम सबने भी जो है मिलके जो है वेलकम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के माइंड्स में डाउट्स भी हैं, तो वो डाउट्स जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्लियर भी कर रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू अदर मोड्स ऑल्सो। और इस सिस्टम को सारे को प्रॉपर्ली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट ने उसके लिए भी जो है सेपरेट इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए हैं। चाहे उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हो, एडवोकेट्स हो, उनको एडुकेटली जो है एजुकेट किया जा रहा है। उसके लिए वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी हैं, कंक्लूड भी हो चुकी हैं कुछ लेवल्स के ऊपर, और दिस इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। और जो चेंज है, जैसे मैंने पहले कहा, दैट इज लॉ ऑफ द नेचर। अगर इसमें भी कुछ लैकुनाज होंगे, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डॉक्यूमेंट हमने जो है खुद बनाया था, अगर उसमें 106 अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, तो अगर इसमें भी सब्सिक्वेंट स्टेज पे कहीं हमें लगेगा, पब्लिक एट लार्ज को लगेगा, स्टेक होल्डर्स को लगेगा, गवर्नमेंट को लगेगा, तो इसमें भी चेंजेस लाई जा सकती हैं। उसमें दैट वुड बी ऑलवेज ए वेलकम स्टेप। जैसे आपको पता है एक प्रोविजन जो है हिट एंड रन केस का जो है गवर्नमेंट ने जो लाया था, उसके अगेंस्ट जो स्टेक होल्डर्स थे, ट्रकर्स एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने एक जो है उसमें जो है प्रोटेस्ट किया। उसको ऑन होल्ड गवर्नमेंट ने एज ऑन डेट कर दिया है। तो वो कंसल्टेशंस के बाद उस प्रोविजन को भी थोड़ा बहुत अमेंड करके उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एट दी लास्ट में यही कहूंगा कि दिस इज ए वेलकम स्टेप। ये एक न्यू इनिशिएटिव है जिसको हम सब ने जो है अडॉप्ट करना है, और इसी के तहत हमने जो है एक जस्टिस डिस्पेंसेशन की एक गवर्नमेंट की अप्रोच है, उसको एक सक्सेस स्टोरी की तरफ लेके जाना है। और जो ग्रोइंग इंडिया है, चेंजिंग इंडिया है, उसमें हमने भी जो है कंट्रीब्यूट करना है वन वे और दी अदर वे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Your words of wisdom truly did justice to this Vartalab. I now would like to invite Shivam Siddharth sir, SP North IPS, our chief guest, for his keynote address. Good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank PIB Jammu for inviting me to this prestigious event, and I would say this Vartalap, mini Vartalap, is a appropriately timed event, as we know that in a couple of days there is going to be a watershed moment in our criminal justice system's history. On 1st July, we'll be finally saying goodbye to the colonial era criminal laws, and it would be a new dawn when 3 new laws that are based on Indian thinking and which are enshrined in the principles of justice, equality, and impartiality will be implemented in our country. Like the previous speakers before me said, that it is not Bharatiya Dand Sanhita, it is Bharatiya Nyaya Sanhita, which in itself demonstrates that the government is committed to delivering justice and not just punishment. So that highlights the transformative change in the thinking in which these new laws have been framed. So a lot has been already, the details have already been shared, and over the course of the past few months, a lot of awareness has been generated on what new sections have been introduced, what new changes have come. But
I would like to once again highlight on some important aspects which will come into force once these new laws are implemented from 1st July. So the foremost approach in these new laws is that they are citizen centric. A lot of changes have been made to ensure that there is not much inconvenience to the citizens and the complainants. For example, the system of zero FIR and e-FIR, electronic FIR, has been institutionalized in the Act itself. Earlier also we used to have zero FIRs, but there was no legal backing for it. Now Section 173 of the Bharatiya Nagariks Suraksha Sanhita has introduced specifically that irrespective of jurisdiction, the FIR has to be registered by the police station. तो पहले ये होता था, बहुत लोग शिकायत लेके आते थे कि थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है, वो हमें इस थाने जाने बोल रहे हैं, वो थाने वाले इधर जाने बोल रहे हैं। तो लोगों को बहुत इस चीज से दिक्कत होती थी कि पुलिस इधर से उधर खाली अपना काम टाल रही है। अब वो सिस्टम खत्म हो जाएगा क्योंकि BNSS में स्पेसिफिकली जीरो FIR का मेंशन है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आती है तो पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज करनी है, चाहे वो जीरो FIR ही क्यों ना हो, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको FIR ट्रांसफर करेंगे। तो इस चीज से पब्लिक को इनकन्वीनियंस काफी कम होगी एंड दे कैन डिमांड जब भी वो किसी पुलिस स्टेशन में जाए, एंड अगर कोई SHO या कोई भी मुंशी उनको ये कहता है कि आप उस थाने में जाओ तो वो इस चीज को बोल सकते हैं कि एज पर लॉ आप गलत कर रहे हो, आपको FIR दर्ज करनी है। तो इससे पुलिस की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी एंड पब्लिक को इनकन्वीनियंस जो होती थी वो कम होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक FIR का कॉन्सेप्ट भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। अब कंप्लेंट्स किसी भी मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पुलिस को वो शेयर कर सकते हैं, बट इसमें एक ये है कंडीशन कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो कंप्लेंट आ रही है उसको विद इन 3 डेज कंप्लेनेंट को आके फिजिकली पुलिस स्टेशन में साइन करना होगा। बल्कि इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पुलिस इज बाउंड टू इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर इनटू इट। तो व्हाट्सएप पे भी हमें पहले कोई कंप्लेंट आती थी, लोग भेजते थे, किसी वजह से वो आ नहीं पाते थे तुरंत, तो उस चीज को भी एड्रेस किया गया है एंड अब लोग किसी भी मीडियम के थ्रू कंसर्न पुलिस स्टेशन को शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। और कुछ चीजें जो चेंजेस आई हैं इसमें लॉ में, वो एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है कि पहले हमने ऑब्जर्व किया था कि रिसेंट 10-15 इयर्स में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो बूम आया है, जिसकी वजह से सारी चीजें व्हाट्सएप पे हो रही है, CCTV फुटेजेस हैं, सोशल मीडिया पे एविडेंस है, तो इतने तरीके के वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंस आ गए हैं, जिसके लिए हमारा जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट था और पीनल कोड था वो उसमें एडिक्वेटली वो चीजें एड्रेस नहीं हो रही थी। तो इन चीजों को एड्रेस किया गया है जो हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके अंदर सेक्शन 57 के तहत प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी अब प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। तो अब इससे बेसिकली लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को बढ़ाया गया है। तो इससे पुलिस को भी आसानी होगी, कोई भी जैसे हमें सोशल मीडिया पे कोई फुटेज है, कहीं पे कोई मोबाइल में एविडेंस शेयर करता है, उसको भी हम इजीली अपने केस में इनकॉर्पोरेट करके उसकी वैलिडिटी और सैंक्टिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शंस की अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में कई सारे नए ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं। जैसे प्रेजेंटेशन में आपको बताया गया है कि पहले स्नैचिंग एक डेडिकेटेड ऑफेंस नहीं था, अब उसको एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है विद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। इसके अलावा टेररिस्ट एक्ट के लिए एक नया ऑफेंस इंक्लूड किया गया है, जो हमारा पहले यूएपीए पे हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट थे। उसके अलावा BNS में भी एक सेपरेट सेक्शन है टेररिस्ट एक्ट्स के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है। सेडिशन जैसा आप सब जानते हैं, सेडिशन को रिपील
डिलीट कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल इसके वो केसेस आते थे। एंड कई सारे ऑफेंसेस में पनिशमेंट को बढ़ाया गया है एंड कई सारे ऑफेंसेस में पनिशमेंट डिलीट की गई है और ऑफेंसेस को भी डिलीट किया गया है। जैसे सुसाइड को कम्प्लीटली अब अटेम्प्ट टू सुसाइड का अब सेक्शन डिलीटेड है क्योंकि वो भी हमारा जो रिफॉर्मेटिव एंड रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट है उसको भी रिकग्नाइज किया गया है इस चीज में। एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसा प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा कि फॉल्स प्रॉमिस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लाई गई है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इसको भी सेपरेट एक सेक्शन बनाया गया है। गैंग रेप के लिए पनिशमेंट एनहांस की गई है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज में और सेक्शंस में पनिशमेंट को मॉडिफाई किया गया है टू सूट दी मतलब जो रियल वर्ल्ड के हमारे प्रैक्टिकल रियलिटी जो होती है उसे सूट करने के लिए। एंड इसके अलावा जैसा प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स बड़े सारे रिसेंट टाइम्स में हुए जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत लॉलेसनेस और अनार्की का वो दर्शाता है। तो मॉब लिंचिंग को स्ट्रिक्टली डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड अब उसको एक सीरियस ऑफेंस बनाया गया है जिसमें पनिशमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट इंट्रोड्यूस की गई है। फिर जैसा मैंने आपको कहा कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत जोर दिया गया है। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च सीजर प्रोसीजर्स का इसमें स्पेसिफिक प्रावधान लाया गया है और स्टेटमेंट्स, विक्टिम के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने का भी ऑडियो वीडियो माध्यम से इसमें प्रोविजन है। उसके अलावा आप देखें तो जो ट्रायल के दौरान जब विटनेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने होते थे तो उसके लिए भी अब कोर्ट के पास प्रोविजन है कि वो ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के थ्रू वो रिकॉर्ड कर सके। तो ओवरऑल सिटीजन्स के लिए बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको ये सोच के लाया गया है ताकि लीस्ट इनकन्वीनियंस हो पब्लिक को। एंड जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लोगों को पहले लगता था कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, प्रोसेस ही पनिशमेंट है, उस चीज को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे इसमें इनोवेटिव प्रोविजंस को लाया गया है। वुमेन एंड चिल्ड्रन के खिलाफ जो ऑफेंसेस थे उनको कंसोलिडेट करके एक ही साथ एक ही सेक्शन में एक ही चैप्टर में उन्हें लाया गया है। फिर एक जो हमें दिक्कत आती थी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते थे तो पुलिस को उनसे रिपोर्ट लेने में बहुत डिले कभी कभार फेस करना पड़ता था एंड उसके लिए हमारे पास कोई लीगल रेमेडी नहीं थी क्योंकि वो इस बात से हमें टाल देते थे कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है। बट अब 7 दिन का मैंडेटरी टाइमलाइन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट अपनी फॉरवर्ड करनी होगी विद इन 7 days एट ऑल कॉस्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसके अलावा आप जैसा जानते हैं कि जो हमारा एक ऑफेंस आप ये इंडियन पीनल कोड हमारा 1860 से चला आ रहा था और आज हम 2024 में है जब 1860 के कंपैरिजन में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्राइम्स जिस तरीके से कमिट किए जा रहे हैं, जिस तरह से सोसाइटी इवॉल्व हुई है, तो ये बहुत एक सिंबॉलिक मूव है कि टू dismantle the old laws and to move to a new system of criminal justice जो हमारे वैल्यूज, हमारी सोसाइटी, हमारी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो आने वाले दिनों में जैसे ये लॉ इम्प्लीमेंट होंगे तो और सारी चीजें हमें पता चलेंगी। जो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस होंगे वो हम पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस कर सके ताकि ये जो लॉज हैं वो ट्रूली इन लेटर एंड इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो सके। सो इस नोट पे मैं अपना एड्रेस कंक्लूड करना चाहूंगा। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक पीआईबी जम्मू एंड जो भी हमारे एस्टीम्ड मेंबर्स हैं मीडिया फ्रेटर्निटी के एंड हमारे गेस्ट टू इनवाइट मी ऑन दिस फोरम। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मीडिया फ्रेटर्निटी की जितना ज्यादा अवेयरनेस इन न्यू लॉज के बारे में वो भी प्रोपोगेट करेंगे अपने माध्यम से, उतना ज्यादा हम इनके ट्रू स्पिरिट को लास्ट सिटीजन तक पहुंचा पाएंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir, for taking out your precious time event for your kind presence. We now
enriching journey, the Q&A session, as it's rightly called so. Education is not the filling of a pail, but the lightning of a fire. And to truly ignite that fire, one must never fail to ask questions, for the curiosity is heart of learning. And now I would like to invite Mr. Zakir Naseer sir to moderate the Q&A session. Now, I would request the media fraternity to, if you would like to ask any questions from our guests, so the floor is now open. So, if you want to ask a question, please raise your hand, and we hope we will answer all your questions. Please go ahead. Please, when you are asking your question, say your full name, the organization you are representing, and the question to whom it's addressed, please. मेरा नाम अरफाज दयांग है। मैं न्यूज सैर इंडिया में काम करता हूँ एज अ जर्नलिस्ट पिछले 6-7 साल से। मेरा सवाल सिद्धांत सर से है। सिद्धांत सर ने कहा कि हर थाने में जो है आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप 0 FIR जो है लगवा सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि पुलिस